हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सही हैं। सो फ्यू पीपल हैव जॉइंड। प्रियंका हैज जॉइंड, रश्मिता हैज जॉइंड, वीरेंद्र हैज जॉइंड, गोपाल कृष्णा हैज जॉइंड. So few people have joined. Rashmita, namaskar. And there are people who have joined in YouTube channel. One is Robin. Robin has said welcome back after so many days. Yes, I am coming after so many days. Actually, I wanted to do it with digital board, but since I am outside Delhi, तो इसीलिए मैं अभी लैपटॉप के थ्रू ही कर रहा हूँ. I have no way out but to come out
live to discuss with everyone. बहुत दिन हो गए, हाँ, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम से पहले तक मैं लाइव कर रहा था। प्रीलिम्स हो गया, फिर रिजल्ट भी आ गया प्रीलिम्स का, उसके बाद फिर हम लोग अभी दोबारा मिल रहे हैं। तो रोबिन इज वेरी राइट, आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम कमिंग हियर। मोनी हैज आल्सो ज्वाइंड, नरेंद्र सिंह इज देयर। तो कई लोग अभी जुड़ रहे हैं यहाँ पर। आज का सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये है कि आई वांट टू डिस्कस अ फ्यू एस्पेक्ट्स फ्रॉम मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू कुछ चीज़ों को मैं बताना चाहता हूँ। एंड पर्टिकुलरली आई कीप दिस सेशन बाइलिंगुअल अगेन, ताकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं बता पाऊँ आप लोगों को। और कुछ एग्जाम्पल्स होंगे कि कैसे आंसर लिखना है। एंड आई हैव गिवन 2 क्वेश्चंस इन माय टेलीग्राम चैनल, है। मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे, एक बैक वाटर्स और दूसरा मैंने शोला शोला इकोसिस्टम के बारे में दिया है। तो कुछ लोगों के आंसर्स आए हैं, तो उसके मैं कुछ फीडबैक, आई विल गिव यू द फीडबैक आल्सो देयर। एट द सेम टाइम हाउ टू राइट आंसर, उसका क्या अप्रोच होना चाहिए, ये मैं डिस्कस करूंगा मैं। और अभी मैं लगातार आई एम गोइंग टू बी कंटिन्यूसली कमिंग लाइव एंड डिस्कस एवरीथिंग। टेलीग्राम चैनल में भी कुछ कंटेंट है, जैसे कि डेली न्यूज फीड डीएनएफ को शेयर किया जा रहा है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, डीएनएफ में आप लोगों ने देखा होगा, देवघर आईएएस एकेडमी दिया के थ्रू डीएनएफ जो है डेली न्यूज फीड में, वहां पर कई चीजों को हम लोगों ने क्या किया है, हिंदू पेपर, द हिंदू पेपर एंड इंडियन एक्सप्रेस, ये उसके जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लगते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है और मेन एग्जाम में हेल्प हो सकता है, और मे बी ऑल ऑफ यू हु आर गोइंग टू अपेयर नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स एग्जाम, आपको कुछ उसमें हेल्प मिल जाए, वो हम लोग थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट। बहुत लेवल पे काम हो रहा है, देयर लॉट ऑफ लेवल्स वी आर वर्किंग देयर। आपको कंटेंट भी मिलेगा, राइट। टाइम के साथ कंटेंट भी मिलता जाएगा, एंड यू विल बी सीइंग दैट ट्रांसफॉर्मेशन। मेंटरशिप प्रोग्राम, है ना, जहां मैंने आप ग्रुप में डाला था मेंटरशिप प्रोग्राम दिया का, जो है कुछ लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, राइट। फ्यू पीपल हैव यू हैव गिवन योर इंटरेस्ट। तो वो चीज हमारी टीम ने देखा है, दिया की टीम हैज गॉन थ्रू इट। आपको उसका रिप्लाई मिलेगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, तो वी आर लुकिंग फॉर सम मिनिमम नंबर। ये बहुत जरूरी होता है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, क्योंकि उसमें मेंटर्स होते हैं, वहाँ पर बहुत सारा बैकग्राउंड वर्क होता है, और वहाँ उनको पेमेंट करना होता है, ठीक है। मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, आई कैन गिव यू फ्री ऑफ कॉस्ट, मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आई एम ऑलवेज देयर एज ए मेंटर। मैं आप लोगों के लिए हमेशा मेंटर हूँ और रहूंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आई विल ऑलवेज बी गाइडिंग यू, राइट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू कोचिंग इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके अपने नियम होते हैं, उनके अपने रूल्स होते हैं, राइट। एंड आई एम ऑल्सो एज अ पार्ट ऑफ अ टीचर हैज टू फॉलो द रूल्स। तो इसलिए कि जो प्रॉपर डेडिकेटेड मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर 2025 पे जिनको जाना है, तो दैट विल बी द प्रोसेस जो इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया कि यू हैव अ वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस, एंड पर मंथ यू हैव टू पे दैट 999 अमाउंट। तो कुछ लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, आई थैंक देम, दोज हु हैव बीन इंटरेस्टेड, बिकॉज दिया का mentorship program is very different type of program, right? Those who will join that program, they will realize how important this program is all about. क्या उसका स्ट्रक्चर किया गया, इसमें कई सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो जुड़ेंगे हमारे साथ, है ना। दे विल बी गाइडिंग स्टूडेंट्स फॉर नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स एग्जाम। एट द सेम टाइम मैं रहूंगा, और फैकल्टी मेंबर्स होंगे जो कि गाइड करेंगे हर एंगल पे। तो दो बहुत सारी चीजें, इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन की मजबूरी होती है कि बाहर के लोगों को पेमेंट करना है। दैट्स व्हाट दैट फीस हैज बीन गिवन, बट इट इज वेरी अफोर्डेबल फीस। 999 पर मंथ, आई डोंट थिंक इज अ वेरी हाई कॉस्ट, है ना। बहुत हाई कॉस्ट नहीं है, इज अ वेरी मिनिमल फीस इज देयर। और मैंने बताया था ये फीस नहीं है, एक तरह कंट्रीब्यूशन है। जब हम लोगों ने मेंटरशिप का जूम सेशन लिया था, वी हैड अ जूम सेशन फॉर मेंटरशिप प्रोग्राम, तो मैंने ये बताया था, डोंट कंसिडर टू बी अ फीस, कंसिडर टू बी एज अ कंट्रीब्यूशन। यू आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स योर सक्सेस, राइट। मुझे पैसा नहीं चाहिए, आई डोंट वांट पर्सनली, मुझे आई डोंट वांट एनी मनी, ठीक है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। बट एज एन ऑर्गेनाइजेशन और बाकी जो मेंटर्स होते हैं, तो वहां उनको पेमेंट करना होता है। एनीवे, वो बात की बात है।
आई विल टेक दैट मेंटरशिप सेशन ऑल्सो दे, तो वो बार की बात है। तो सबसे पहला चीज है कि हाउ आर यू ऑल, आप लोग कैसे हो? कैसे हो आप लोग? तो पहला ये चीज है कि हाउ आर यू ऑल। सौरभ, नरेंद्र, जितने लोग जुड़े हैं, ठीक है, वो सारे लोग जो है, तो पहला ये चीज है कि आप लोग कैसे हो। पहले मैं अभी आया हूं और कल भी आऊंगा मैं, कल टुमारो अगेन आई विल कम लाइव। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू सी योर रिस्पॉन्स, फिर देन आई विल कम टू मेंस आंसर राइटिंग पार्ट, है ना? यस, जो लोग जूम सेशन से हैं वो कुछ बोलना चाहे। प्रियंका, हाउ प्रियंका, यस, प्रियंका, शी कैन नॉट। अच्छा, रश्मिता, हाउ आर यू रश्मिता? हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन? हेलो सर, नमस्कार। या नमस्कार, नमस्कार। सो हाउ थिंग्स आर अम, गोइंग रश्मिता? कैसा चल रहा है आपका सब कुछ? सर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मैं आपकी स्टूडेंट थी संभवम आयुष का। आप हाँ, साइंस एंड टेक लेते हैं। राइट राइट राइट, आई और आई रिमेम्बर, मुझे याद है। पढ़ाई कैसी चल रही है? हाउ साइंस योर स्टडीज गोइंग ऑन? सर ठीक ठाक चल रहा है। इस बार नहीं हुआ है प्री, और 2020-25 के लिए तैयारी चल रहा है। गुड, आपके वेरी गुड। आशीर्वाद दीजिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं, मेरा आशीर्वाद हमेशा है। और मैंने बताया कि मैं हर बच्चों के साथ हूँ, आई एम ऑलवेज विद एवरी वन। तो मेरी तरफ से उसमें कुछ कभी सोचना नहीं है, एंड आई एम ऑलवेज बी गाइडिंग यू ऑल, है ना? मैं आप सबको गाइड करता रहूंगा, इसमें हमेशा रहेगा। सो आप तैयारी करते रहो, यू जस्ट कीप ऑन वर्किंग, है ना, ऑन द राइट पाथ। मैं हमेशा बोलता हूँ, आई ऑलवेज कीप सेइंग दैट, फॉलो द राइट पाथ, राइट? इफ यू आर ऑन द राइट पाथ यस सर। एंड यू आर वॉकिंग ऑन द पाथ, वन डे यू विल रीच योर गोल, ठीक है? तो वो करते जाना है। ठीक है रश्मिता, आई थिंक यू आर फ्रॉम उड़ीसा, राइट? जी सर। राइट। जी सर, जी सर, फ्रॉम उड़ीसा, कटक। भुवनेश्वर ऑन फर्स्ट फर्स्ट अगस्त, 1 अगस्त में भुवनेश्वर में आई विल बी देयर फॉर क्लासेस देयर। 31 की मेरी फ्लाइट है, सर बोले एफटी प्लस, भुवनेश्वर जयदेव फर्स्ट विहार, जी सर। है ना? जयदेव विहार ओके सर, एफटी। आई एम फ्रॉम कटक। यस, कटक इज नियर बाय। कटक इज वेरी नियर बाय। जी सर, मुझे पास है। जी सर, तो मैं जाऊंगी आपके साथ मीट करने के लिए। यू कैन कम एंड मीट मी देयर। मैं जयदेव विहार में, आई विल बी स्टेइंग इन जयदेव विहार, एफटी प्लस का वहीं पर ऑफिस है। जी सर। तो मेरा इन्वायरमेंट इकोलॉजी की क्लास है, ऑफलाइन क्लास, 1 अगस्त से वहाँ स्टार्ट होना है। सो 31 आई विल बी इन भुवनेश्वर रात के टाइम में, एंड फर्स्ट ऑनवर्ड मेरी क्लासेस स्टार्ट होगी। सो गुड टू सी यू देयर। प्रियंका, हाउ आर यू प्रियंका? प्रियंका इज थैंक यू नॉट। सर, वेलकम टू ओडिशा। थैंक यू, थैंक यू। आपको हाँ, टाइमिंग कितना है, कितने बजे आप फ्री होंगे? टाइमिंग मेरा वही मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस होगा। आई विल बी बिजी विथ माय क्लासेस ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की क्लासेस होंगी, तो दैट विल बी कंटिन्यूसली क्लासेस होंगे। और इस बार तो मैंने वहाँ स्टूडेंट्स को बोला है कि मैंने अपने क्लास के स्टूडेंट को कहा है कि मैं उन सबको नेशनल म्यूजियम ले जाऊंगा। देयर इज नेशनल म्यूजियम, है ना, जयदेव बिहार के पास में ही है। जी जी। और मेरा प्लान क्या जी है, सर। क्लास के बच्चों को वहाँ ले जाके, पूरा नेचुरल हिस्ट्री है वहाँ पर, एंड आई विल बी टेलिंग देम इंटायर इन्वायरमेंट थिंग, मैं वहीं पर पढ़ाऊंगा उनको। कि क्या ठीक चीज है है। सर। वो नेचुरल हिस्ट्री जो है ना, वो बहुत अच्छा म्यूजियम है भुवनेश्वर का, है ना, रीजनल सेंटर फॉर नेचुरल हिस्ट्री। मैंने अपने यूट्यूब चैनल में शॉर्ट्स भी डाले हैं। तो मेरा प्लान है कि स्टूडेंट्स को वहां पर ले जाके, जो होता है ना प्रैक्टिकल, एक होता है थियरी जो आप क्लास में सीखते हो, अनदर थिंग इज इन प्रैक्टिकल वे कैन बी डन देयर। तो प्रियंका हैज गिवन द रिप्लाई इन चैट बॉक्स। नाइस सर, अगेन गुड टू हियर फ्रॉम यू। नरेंद्र, हाउ आर यू नरेंद्र? हाउ योर स्टडीज गोइंग ऑन? कैसी पढ़ाई चल रही है? हेलो सर, गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग नरेंद्र, कैसा चल रहा है सर सब कुछ? सर अच्छा चल रहा है अभी तो, बट वो मेंटोरशिप प्रोग्राम को सर काफी ईगरली वेट कर रहे हैं ताकि और अच्छे से जो है पढ़ाई और तैयारी हो सके। ओके, गुड, वेरी गुड। और जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं, राइट, सबको मेरा या हेलो, एंड आई एम कमिंग टू द पार्ट ऑफ इट। सो लेट्स स्टार्ट विद द
सेशन जो है, ठीक है, let me start with the session so that we are able to go into part of the things there, right? So we will be going to all such areas one by one, है ना? और जहां भी बीच में हो you can interact में, मैं YouTube चैनल में भी chat box देख रहा हूँ. Those who are in Zoom session, I'm looking into that also, right? So please keep on there. So let me start with the session and we will interact more in that, ठीक है? So first of all, you all can see here. Let me share my screen. ठीक है? Mains exam answer writing session. ठीक है? This is the main topic of today's class. So it's very important that जब आप mains exam when you are writing answer, you need to develop a particular way to express your answer. ठीक है? मैं कई बार I've been telling, right, that when you are in the process of preparation part, right, जब आप प्रिपरेशन के पार्ट में होते हैं तो ऑलवेज ये चीज को ध्यान रखना होता है कि टू थिंग्स आर देयर. मैंने कई बार ये मैं क्लास में बताया कि वन इज दैट योर इंफॉर्मेशन बेस, हाउ मच यू हैव इंफॉर्मेशन और वॉट एवर यू हैव रेड, राइट. एंड नेक्स्ट थिंग आता है कि आपका जो इंफॉर्मेशन बेस है, दैट इज अ you have read newspaper, magazine, you know, current news, books, study material, class notes, ये सब आपका इंफॉर्मेशन बेस है. यू नो लॉट ऑफ थिंग्स, आपको बहुत कुछ पता होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, यू ऑल नो दैट. एक होता है जानना, यू आर अवेयर ऑफ इट, यू आर नोइंग दोज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग, दैट मीन्स ये पार्ट जो है, how much you understand. Main exam is based on understanding of key areas of history, polity, geography, science and technology, right? Every area, governance, internal security, disaster management, right? Environmental conservation, society, social justice, geography, whatever. तो अब कितना आपकी अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज वेयर दिस पर्टिकुलर थिंग कम्स इनटू दैट. कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आप आंसर राइटिंग पे जाते हो, व्हेन यू आर गोइंग फॉर आंसर राइटिंग, you should not only be aware of facts, informations, subject wise, but also should have good understanding to present your answer in a proper manner, in a holistic manner. वो बहुत जरूरी होता है. तो इस कॉन्टेक्स्ट में व्हाट आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि जब हम लोग मेंस आंसर राइटिंग पार्ट में आते हैं, यूपीएससी मेन एग्जाम, or I'll tell any exam, any main exam, even you appear state PCS exam, when it comes to answer writing, now what are the main aspect which you have to keep in mind? Then I will give you certain feedback of your corrected answer there. First thing here, पहला चीज है understanding. The question. क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग. पहला चीज है क्वेश्चन को समझना. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्वेश्चन को मतलब ऊपर ऊपर पढ़ते हैं और फिर आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं. दैट शुड नॉट बी देयर. दैट मीन्स यू हैव टू राइट आंसर, बट यू हैव टू राइट आंसर which need to be in such a manner it talks about the subject area. आपको सब्जेक्ट एरिया के बारे में पता होगा. तो दैट मीन्स कॉल्ड हियर डिमांड, द कनेक्टिंग विद द सब्जेक्ट, whether it is a history, geography, culture, science take, environment, क्या सब्जेक्ट एरिया. एंड सेकेंड इज दैट
टॉपिक, विच टॉपिक बीइंग आस्क्ड, राइट। तो उसमें ऑलरेडी डिवीजन है, जीएस पेपर जीएस 1 2 3 4, है ना। जीएस 4 दैट एथिक्स, जीएस 3 का आपको पता है इकोनॉमी डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस टेक, सिक्योरिटी, ये 5 पार्ट है। जीएस 2 ऑल्सो यू नो दैट, जहां पर एरिया 1 भी है। तो सब्जेक्ट एंड उसके अंदर टॉपिक्स हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो नेक्स्ट थिंग आता है, क्वेश्चंस हैव गॉट सम काइंड ऑफ की टर्मिनोलॉजी। I will be explaining right now in this session. In question there, क्या पूछा जा रहा है, क्या आपको लिखना है। कई बार ये कंफ्यूजन होता है। Many times you'll find there confusion with respect to this one. Like here, first thing comes this one. Like for example, discuss, explain, comment, illustrate, elucidate, critically examine, और let's say examine, ऐसे कई वर्ड है। क्रिटिकली एनालाइज, इसका मीनिंग होता है, इसके कुछ मीनिंग होते हैं, सर्टेन टाइप्स ऑफ मीनिंग आते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट वन हैज टू प्रेजेंट द आंसर, राइट द आंसर। तो जब तक ये टर्म्स आपको क्लियर नहीं है तो यू विल बी राइटिंग आंसर, मतलब आप आंसर लिखोगे लेकिन बट इट विल नॉट बी ऑन द राइट वे। तो ऐसी टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। नाउ थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आंसर राइटिंग का तीसरा चीज है योर स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन। कई बार क्वेश्चन आता है कि कैन बी यूज कलर पेन्स, क्या मैं कलर पेन यूज करूं। तो कलर पेन्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन यूपीएससी मेंस एग्जाम। आपको वहां पर कलरफुल आंसर नहीं करना है, रेड ग्रीन येलो वो नहीं चाहिए। You have to write with blue ink or black ink, whatever ink you have, but your presentation should be neat, proper. Style of presentation, तो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेट मी जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड। वेन यू गो टू स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन, एक है क्लैरिटी। पहला चीज आता है क्लैरिटी, कि वो क्लियरली यू आर एबल टू राइट, मेंशन दैट। दूसरा आता है यहाँ पर सिंप्लिसिटी, you are writing a technical topic but in a simple lucid manner, comprehensive manner। वहां आपको अपना लैंग्वेज का ये नहीं दिखाना है कि आप बहुत आपका बहुत इंग्लिश लैंग्वेज, और इफ यू राइटिंग हिंदी कि आप बहुत उसमें अच्छा आपको पकड़, वो नहीं बहुत मैटर करता है। सिंप्लिसिटी का मतलब है कि आपके जो सेंटेंसेस होंगे वो सिंपल सेंटेंस होना चाहिए, इट शुड नॉट बी वेरी कॉम्प्लेक्स। और कई बार क्या होता है, व्हेन यू राइट वेरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यू लूज द एसेंस, यू लूज द मीनिंग। मतलब कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि वो बहुत लंबा एक सेंटेंस पूरे पैराग्राफ में लिखते हैं, पूरा पैराग्राफ होता है, और वो एक तरह से क्या होता है कि हेवेयर हो जाता है। वो करेक्ट करेक्ट उसका जो जो वो बताना चाह रहे हैं, वट एवर द स्टूडेंट इज वांट टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, इट गोज सम अदर डायरेक्शन। यूज सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। क्लैरिटी, you are clear about the topic which you are writing there. Third thing comes here, what is very, very important, which I always say is that syntactic, syntax, grammar, sentence formation, spelling। कई बार जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, लैंग्वेज में पकड़ होनी चाहिए, you should have good command over language, but sometimes what happens, the students make spelling mistakes, the spelling mistakes होते हैं, या the writing part है ना, जहां पर बहुत सारे जो grammatical errors होते हैं, that shows very bad impression to the examiner। अगर कोई एग्जामिनर आपकी कॉपी को करेक्ट कर रहा है और वहां पर ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, सेंटेंसेस नहीं है ना, राइटिंग मिस्टेक्स हैं, वो बहुत बैड होता है, उसमें मार्क्स आपको उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो मेरा ये कहना है कि व्हाट आई वांट टू से,
कई बार मैंने ये देखा है, अभी आजकल क्या हो रहा है, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम में आ रहे हैं और उनकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है। और वो कई बार जो है, क्योंकि इंग्लिश उन्होंने उतना स्ट्रांगली प्रिपेयर नहीं किया, और फिर वो जब लिखते हैं तो कई तरह गलतियां होती है क्योंकि उन्होंने उस ढंग से प्रैक्टिस नहीं किया है। लेकिन मैं तब भी मैं बोलता हूँ कि दोज हु आर विद अदर लैंग्वेज, हिंदी मीडियम के अगर विद्यार्थी है, अगर वो अपना उत्तर लिख रहे हैं, आप आसान भाषा में, आसान शब्दों में, है ना, सरल वाक्यों में अपना उत्तर लिखिए। ठीक है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सिंटैक्स शुड बी प्रॉपर, राइट। अनदर थिंग हियर, व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ हियर, जो कि प्रेजेंटेशन में मैटर करता है, that is in terms of your the part of the clarity. You have to be very very much clear. ठीक है, to the point. You have to explain, but you have to use keywords. That means what I want to say, essence. It should reflect the essence of the subject. उन्हें दिखना चाहिए कि यू आर नॉट अ लेमैन, आप मेंस का आंसर लिख रहे हो आप, यानी कि आपने पढ़ा है, यू हैव रेड, है ना, आपका नॉलेज बेस बहुत अच्छा है, एंड इन दैट नॉलेज बेस यू नो व्हाट आर द की वर्ड्स, क्या क्या टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, उसको आप प्रेजेंट कर रहे हो आप, यू आर राइटिंग दोस काइंड ऑफ की वर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, कनेक्टिंग विद द टॉपिक वेर यू आर राइटिंग द आंसर। ठीक है, एसेंस नहीं खोना चाहिए। एंड देन दिस डायग्राम, illustration, there has to be illustration, flow chart, diagram, right? if it's geography question, sometimes map, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, एक जो प्रॉपर होता है पैराग्राफ लिखना, और एक होता है पॉइंट वाइज लिखना, बुलेट पॉइंट्स, पॉइंटर्स। सो योर स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन should be mix, should be mix of paragraph and points, bullet points. When you start your answer, you should start with the paragraph, and then you can put into the pointers or bullet points. जहां आपको लगता है कि ठीक है, ये चीज है, पॉइंट वाइज आप बताते जा रहे हो, एडवांटेजेस सो एंड सो, डिसएडवांटेजेस सो एंड सो, प्रोस एंड कॉन्स सो एंड सो, वो बुलेट पॉइंट्स पे आप कर सकते हैं। बट इंट्रोडक्शन पार्ट जब आप लिख रहे हैं, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद पैराग्राफ। ये सारी चीजें आपको पता है, यू ऑल आर अवेयर ऑफ ऑल दिस एरियाज देयर, राइट? यू आर ऑल अवेयर ऑफ ऑल सच एरिया। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, ये चीज वो आप होना चाहिए, मिक्स ऑफ पैरास, पैराग्राफ्स and bullet point. This should be done there. That is where the requirement is there, right? तो वहां पर होना चाहिए। Another thing which generally I have found that when you start any question there, कि क्या उसमें कंक्लूजन होना चाहिए, क्या कुछ क्वेश्चन में कंक्लूजन नहीं होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर जनरली जो होता है, एनी आंसर व्हाट यू कम अक्रॉस, जो स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज अ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ योर आंसर। ये हमेशा ये ध्यान रखना है कि इसको तीन पार्ट में हमेशा होता है। वन इज इंट्रोडक्शन, वेर यू हैव टू हैव इंट्रोडक्शन, देन द बॉडी, ये आप सबको पता है, यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट, एंड फाइनली द सजेशन, कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड, ये पार्ट होता है। और ये आप स्कूल डेज से कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि आपको नहीं पता है। यू हैव बीन डूइंग दिस काइंड ऑफ टास्क राइट फ्रॉम द स्कूल डेज, राइट? यू आर डूइंग इट फ्रॉम द स्कूल डेज, कॉलेज डेज। You have to bring first introduction, introduce the question which is being asked. Then what is being you have to write, that should be the part of the body of the question. और फिर लास्ट में एंड करना है विद कंक्लूजन। तो ये पार्ट हमेशा रहता है। तो दिस व्हाट आई हैव सेड हियर, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, द कीवर्ड्स, सब्जेक्ट, टॉपिक, देन आई हैव सेड की टर्मिनोलॉजीज एंड क्वेश्चंस जो हम लोग डिस्कस करेंगे, देन स्ट्रक्चर ऑफ आंसर्स, राइट? ये पार्ट को ध्यान रखना। Now what I'm saying here, let's look at this terminologies.
Let's understand briefly. Then I'll come to the question what I've given there in the Telegram channel. मैं उसका डिस्कस करता हूँ. ठीक है. अब यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी जो है, अब जैसे फॉर एग्जांपल टर्मिनोलॉजी का हम बात करें तो बहुत सारे चीजें जो टर्मिनोलॉजी पार्ट में आते हैं यहाँ पर, है ना, जो आपको प्रॉपर वे से ध्यान रखना है. अब जैसे कि कई बार यहाँ पर होता है डिस्कस, राइट. अब जैसे फॉर एग्जांपल आई गो थ्रू इट वन बाय वन. आपको पता है डिस्कस क्या मतलब डिस्कस का? नरेंद्र, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्कस? गुड इवनिंग ऑल जो लोग यूट्यूब में जुड़ रहे हैं. गुड इवनिंग टू एवरीवन. यस, व्हाट इज डिस्कस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्कस? इफ एनी क्वेश्चन आस्क्ड डिस्कस. Hello, हाँ नरेंद्र. hello. So discuss, we can say that if any question is given, so to expand it आपका वॉइस or थोड़ा to कम आ रहा है. तो लाउड बोलिए. so we can if any question which is demanding for the discuss, that we can say we want to we there is a need to expand that question in multiple dimensions. Right, very good, very good, very good, Narendra. So what is here means, sir, that the multiple these aspects or dimensions of topic being asked. In the question there, whatever the question asked there, let me take example also there. Multiple dimension, all aspect of that. You have to expand. We have to expand that area. Like for example, just let's take example. Like for example, discuss the role of, right? If I'm asking, discuss the role of space technology in development of society. Development of society. Suppose you get a question here. Discuss the role of space technology in development of society. That means you know the subject is science and technology and the topic is space technology. Now you have to write in terms of society. So when you take this question, so what is the first thing? First will be introduction. Proper introduction. That today worldwide space technology has become integral part of human lives. मैं बोल के बता रहा हूँ, it has become integral part of human lives. Today, in our day-to-day life, mobile phone, internet banking, and all those services, what we do, they are catered with the help of satellite technology, SATCOM. Even weather forecast, meteorology, then again the reports and all which is disseminated that is through the with the help of mechanism of satellite. ये मैं आप सबको पता है इसमें. तो यहाँ पर जब इंट्रोडक्शन है तो यू आर इंट्रोड्यूसिंग द स्पेस. व्हाट इज स्पेस टेक्नोलॉजी ऑल अबाउट? Satellites, different type of satellites, different applications, and then you are coming to the body. Body will be what? That here space technology के सारे पहलू को जो है, राइट, जो सोसाइटी के काम के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, मल्टीपल डायमेंशन, हेल्थ, एजुकेशन, disaster management, industry, economy. So now you are presenting multiple dimensions. और इस कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, कई बार गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, यू कैन मेंशन योर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, जैसे ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, and the role of the ISRO in such kind of development satellite. Today we have network of INSAT, GSAT. We have remote sensing satellite. Now you're using keyword remote sensing satellites, Cartosat, ResourceSat. You're giving those examples. तो जब आप मल्टीपल डायमेंशन लिख रहे हैं तो आप उसको एग्जाम्पल के साथ सपोर्ट कर रहे हैं. एंड यू आर ऑल्सो
गिविंग प्रोवाइडिंग फ्रॉम इंडियन एस्पेक्ट, आप इंडियन एस्पेक्ट को बता रहे हो आपको, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? नाउ व्हेन इट कम्स टू अनदर पार्ट ऑफ इट, like here when you come across the word explain, what you discuss, ठीक है? Now I'm going to explain. Here the word explain. Explain का मतलब होता है कि given issue और given topic उसके बारे में लिखना है. That means write about the topic, right? उसको explain करना है, मतलब उसको आप डिटेल में कर रहे हो, टॉपिक इन डिटेल. You are going for detailed aspect of it. You are explaining. Explain is almost like why. Like you can say that is a why. Why it is so. You are explaining. जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल जो कहते हैं ना why मतलब कि why there is let's say a disease outbreak in Kerala. आपको पता है कि पिछले कई सालों से जब भी हम देखते हैं केरला हमेशा न्यूज में आता है, और करंट एस्पेक्ट में भी है, निपा वायरस या जो भी ऐसे डिजीज है. तो जैसे फॉर एग्जांपल जब एक तरीका होता है व्हाई केरला हैज सच काइंड ऑफ डिजीजेस, तो वही चीज क्या है, यू आर एक्सप्लेनिंग, राइट? तो उसके कई कई चीजें हो सकता है एक्सप्लेनिंग, केरला में क्यों इतना ज्यादा डिजीजेस हैं, राइट? एंड व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग दैट वन, you are giving all the causative factors, climate of that state, then again for social economic aspect, that in terms of the people who come from outside, that migration of the people who are coming to Kerala, the Kerala people who are going outside to work, and when they come they bring there. Then you are also talking about the tropical environment, the climate part of it, और फिर आप उसको पूरा एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है? तो एक्चुअली एक्सप्लेन इज वन वे टू गिव देयर. अब जैसे एक्सप्लेन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, सपोज क्वेश्चन इज दिस वन, एक्सप्लेन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर. FBR, यू आर एक्सप्लेनिंग दैट व्हाट इज FBR एंड क्या उसका है और उसके बारे में, और समटाइम एक्सप्लेन द डिजास्टर, कोई भी डिजास्टर वहां पर है, यू आर ब्रिंगिंग दोस काइंड ऑफ पॉइंट्स देयर, राइट? तो जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप उसके बारे में about fast breeder reactor. It is a nuclear reactor developed by Indira Gandhi Center for Atomic Research, Kalpakkam. It uses uranium-238, which breed into plutonium by fast neutron. And we can also breed thorium to produce uranium-233. तो आप एक्सप्लेन करते जा रहे हो. कई बार क्या होता है, वर्किंग मैकेनिज्म, समटाइम्स वर्किंग मैकेनिज्म, right? Let's say that particular any kind of thing we are explaining that, उसके बारे में बता रहे हो आप, राइट? तो ये चीज एक्सप्लेन का मतलब ये नहीं कि आपको नेगेटिव चीजों को बताना है, उसके बारे में जो भी आपकी चीजें वो आप यू आर राइटिंग अबाउट इट, यू आर क्लियरली स्पेसिफाइंग इट एंड मेंशनिंग दैट, राइट? देन यू नो हियर कमेंट. What do you mean by comment? ये सारे वर्ड पता है आपको. What do you mean by comment? Yes, anybody in YouTube channel, right? Or let's say even a Zoom session. Anybody want to say that? What is comment? So to provide one's own views on the question. Very good, very good. Here, to provide here, very good. That's to provide one's view.
either you are in favor or against, whatever, one's views on an issue there, maybe an issue or a topic there. Your positive, negative, you're giving your opinion. That is your opinion. आपके जो ओपिनियंस हैं, जो भी आपका व्यू है उसके बारे में, आप वो कमेंट कर रहे हो. It is your personal kind of view which you are referring there. You're giving those viewpoint in your answer writing part, right? और उसमें जो भी पॉजिटिव नेगेटिव, इसका फेवर और यू आर नॉट इन फेवर, व्हाटएवर योर व्यू पॉइंट, दैट यू राइटिंग. और कमेंट जो होता है हमेशा सफिक्स होता है. समटाइम यू विल फाइंड कमेंट एज अ सफिक्स, इट यूज्ड एज अ सफिक्स इन द क्वेश्चन. और कई बार स्टेटमेंट होते हैं, you comment on the statement. Sometimes comment question जो होते हैं on some statement will be given there. Like for example, if I give the question here, like for example, if we take a question here, let's say a statement given. Let's say a statement given here. India's private sector participation, I'm just giving a statement here, participation in defense sector is both boon as well as ban. Suppose this is a statement. India's private sector participation in defense sector is both boon as well as ban. And you have to comment. Comment on the statement here. So that means you're giving your opinion, your viewpoint, right? तो जब आप इसके पे कमेंट करते हैं, when you are writing a comment there, so you are basically, you are in the answer, you will first bring about defense sector, then private players in the defense sector. अब ये चीज को आप highlight करेंगे, and then you will be giving your opinion. Yes, अगर ये boon है, तो how the privatization or the role of the private companies in the defense sector, जैसे for example making a rocket or weapons, or let's say participation in terms of aircraft, fighter jet, helicopter, like you know that Rafale का जो deal हुआ था, अभी deal है फ्रांस के साथ, so there's Ambani's participation in that one. Even now today, this one indigenization of Bofors gun, Dhanush, Tata company is participating there. So what are the benefits? What do you think that, okay, is the right thing here? But maybe you have something, it is not good. Maybe sometimes a private company may look for more profit motive, right? It will look more for the market size, profit motive. Sometimes there may be risk of the confidential information, security related topic, the things may go to some outsiders. How we are going to check that? You're giving your viewpoints, right? So वो part यहाँ पर आ सकता है in terms of answer writing part, right? Then this one, analyze. Analyze. Like for analyze, so what is analyze here? You are basically giving here pros and cons. Analysis मतलब क्या होता है? The brain, analytical mind. We are thinking on that, thinking on the problem, right? Analyzing that problem. उसका cause क्या है? That means here, let's say, analysis which require cause. क्यों वहां पर cause है? क्यों हो रहा है? Why? What is the reason for that? Right? Impacts. You are analyzing what are the impacts, let's say, of that particular topic. क्या impacts हैं? Right? Cause, what are the factors there? Right?
and you are looking into all those kind of things. This benefits, disadvantages, you are analyzing it. जो भी इसका repercussions है वो आप कर रहे हो आप. जैसे फॉर एग्जाम्पल एनालाइज, सपोज अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, एनालाइज फॉर एग्जाम्पल social benefits, let's say I'm giving benefits of the use of AI, of artificial intelligence, AI. So you are writing about AI, artificial intelligence. That means you are starting your answer with the AI. कि what is AI, right? What are the use of AI? That's the introduction part. But then finally, what you are doing? Finally, you are coming to the part of social benefit. You are analyzing that. How AI can help in that kind of a social benefit, like for the healthcare, education, right? Environmental aspect. और उसके सारे पर्सपेक्टिव को आप एनालाइज कर रहे हो. हिंदी में बोलते हैं विश्लेषण करना. You're breaking down and then are telling that this is the way the social benefit can be obtained with the use of AI. वो पार्ट वहां आ जाता है. That thing comes here, right? कई बार इसी में आता है when you find here critically analyze. Now, when you are taking critically analyze, so you are not only talking about its various aspects, but you are also having here in terms of positive and negative. Alochana, criticism. You are writing here positive, negatives, of the given issue, right? Criticism always looks into the negative part, but again, you have to bring positive part also there. Like for example, critically analyze right? Critically analyze, let's say here, suppose here, analyze use of stem cells in medical therapy. Suppose stem cells biotechnology. तो उसमें बताना होगा कि स्टेम, पहले तो आप इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे. इन द इंट्रोडक्शन यू आर राइटिंग दैट व्हाट आर स्टेम सेल्स, राइट? हाउ द स्टेम सेल्स कैन हेल्प. यू आर राइटिंग ऑल दिस वन. बट व्हेन यू आर कमिंग टू द क्रिटिकल एनालिसिस of the use of stem cell in medical treatment diseases, you are writing not only the positive side, कि stem cells can cure diseases like leukemia, blood cancer, all those kind of things you are writing, but you are also bringing the negative side. आप उसमें नेगेटिव साइड भी लिख रहे हो कि स्टेम सेल्स जो है उसके क्या साइड इफेक्ट होंगे, है ना? कॉस्टली है, इज वेरी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, not everybody can afford it. Then again, the part of ethical concerns, क्या हमें करना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए. You are bringing those kind of perspective. Where India stands in the stem cell therapy. हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो where is our standing? तो वहां पर आप एनालाइज कर रहे हो, या critically analyze the nuclear power program of India. You are writing about nuclear power program, 3 stages. Suppose critically analyze 3 stages of India's nuclear power program. That is the stage 1 PHWR, second stage FBR, third stage ASWR. ये जो आपने न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा है, फिर आप उसको हर पर्सपेक्टिव एनालाइज कर रहे हो और वो उसके नेगेटिव साइड को भी आप देख रहे हो. बट व्हेन यू आर राइटिंग आंसर, यू हैव टू बैलेंस आल्सो दिस, राइट? देन यू नो समटाइम्स यहां पर होता है एग्जामिन. Like for example, when a doctor examine, or let's say teacher examine any answer. So what is examination? You are looking into each and every department. Examine मतलब हो गया
आप इवेल्युएशन कर रहे हो, दैट मीन्स इवेल्युएशन ऑफ अ टॉपिक, लेट्स से इशू हियर। आप उसको जो भी उसके इवेल्युएशन है, अब यहाँ कंफ्यूजन होता है सर फिर एनालिसिस और एग्जामिन में क्या अंतर हुआ? एनालिसिस में आप डेप्थ में जाते हो, एनालिसिस में आप डेप्थ में जाते हो, ये आप डेप्थ में जाते हो, यू आर इन डेप्थ। बट जब एग्जामिन आप कर रहे होते हैं तो उसकी जो वेरियस फैक्टर्स हैं आप उसको कंसिडर कर रहे हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इज एग्जामिन role of, suppose I'm writing here, role of big data. Examine the role of big data, right? Big data, और ये कई बार हो सकता है कुछ सेक्टर स्पेसिफिक हो, इन इंडस्ट्री, इन आईटी, व्हाटएवर, दैट पार्ट विल कम। तो जब एग्जामिन द रोल ऑफ बिग डेटा, यू आर एग्जामिनिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ बिग डेटा। पहले तो आपने बताया व्हाट इज बिग डेटा एनालिटिक्स, where the data structure, unstructured data can be analyzed through the part of big data analytics. We can get the result fast and everything. You are writing about that as a part of introduction. But बाद में आप क्या कर रहे हो, उसके रोल आप बता रहे हो, रोल के बाद आप एग्जामिन कर रहे हो इससे क्या क्या एस्पेक्ट हो सकता है। It uses mathematics, it uses statistics, it uses area of advanced computation, है ना, which require those kind of expertise. वो चीजों को आप कर रहे हो आप। कई बार होता है एग्जामिन द कॉज ऑफ, फॉर एग्जांपल एग्जामिन लेट्स से वाटर पोल्यूशन ऑफ मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। सपोज यू गेट दिस क्वेश्चन environment में, examine role of या examine water pollution of major rivers of India। तो उसके बारे में आप पता कर रहे हो कि क्या क्या कारण रहा है, क्यों वाटर पोल्यूशन हो रहा है, क्या क्या उसमें चीजें हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं, राइट? सोर्सेस कहाँ से हैं, कहाँ से वो वाटर पोल्यूशन हो रहा है, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ दैट वाटर पोल्यूशन? इज कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्री एफ्लुएंट, इज कमिंग फ्रॉम डोमेस्टिक सीवेज, एग्रीकल्चर रन ऑफ। अब एग्जामिन कर रहे हो कितना लेवल ऑफ पोल्यूशन है ना, कहाँ कहाँ कौन सा रिवर जो है सबसे ज्यादा पोल्यूटेड रिवर है, राइट? यू आर ब्रिंगिंग दोस इवन द डाटा आल्सो, these are the river which are highly polluted, these are the rivers least polluted, and these are the causes जिसके कारण वहां हो रहा है। वो फैक्टर को आप कर रहे हो। अब जैसे कई बार क्या होता है, यू फाइंड इन द क्वेश्चन हियर elucidate। तो elucidate का मतलब होता है यू कैन यूज डायग्राम, some diagram, right? है ना, some kind of diagram, some kind of a figure, map, etc. That will to highlight. You're bringing more into that and you're highlighting that one, है ना? तो आप उसमें डायग्राम यूज कर सकते हैं, कुछ फ्लो चार्ट आप यूज कर इलुसिडेट कर रहे हो, है ना, उसको और उसको आप बेटर वे से बता रहे हो, है ना? इसी केस में आता है, यहाँ पर क्या होता है, पॉइंटर्स होते हैं। दैट मीन इंस्टेड ऑफ राइटिंग पैराग्राफ यू आर राइटिंग पॉइंट्स, दैट मीन्स किसी केस में इलस्ट्रेट भी आता है वहां पर। तो यू विल फाइंड दोस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विल बी देयर। आर्ग्यू, ये गिव यू आर्गुमेंट, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब आप कीवर्ड देखते हो तो आप उसको ध्यान रखना है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कई कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, जैसे आप जब गूगल सर्च करेंगे यू विल फाइंड फॉर डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट हैज गिवन मीनिंग ऑफ दोस काइंड ऑफ की टर्म्स, जिसको आपको ध्यान रखना है। बट एक चीज ये याद रखना है, हमेशा याद रखना है, प्रैक्टिस, यू हैव टू ऑलवेज लुक इनटू द प्रैक्टिस साइड, राइट?
प्रैक्टिस के थ्रू आप करते हो तब आपको पता होता है अच्छा एग्जैक्टली ये लिखना है ये नहीं लिखना है, दिस इज रिक्वायर्ड दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, एंड दैट वे यू आर राइटिंग दिस, है ना वहां पर। तो व्हाट आई डू हियर, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, मैंने एक क्वेश्चन दिया था यहाँ पर, व्हाट इज बैक वाटर, राइट? What are geographical, environmental, and socio-economic importance of backwaters of Kerala? तो कुछ लोगों ने इसका आंसर लिखा है, जो आई हैव गॉट द आंसर हियर। दिस इज तो मैं अभी आपको शो करता हूँ। वन इज जगन्य दत्ता पात्रा, आई डोंट नो वेदर इज इन द यूट्यूब चैनल और समथिंग। जगन्य दत्ता पाट ये जो है, आई विल शो यू दैट पार्ट ऑफ इट, सी हियर। Now this is where you'll find here, है ना, मैं आई एम शोइंग द पेज ऑफ इट। दिस इज द ऑफ जगन्य दत्ता पात्रा, राइट? ही हैज रिटन द क्वेश्चन जो मैंने असाइनमेंट दिया था कि व्हाट इज बैक वाटर, ठीक है, व्हाट आर ज्योग्राफिकल, इन्वायरमेंटल एंड सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक वाटर्स ऑफ केरला, आंसर इन 150 वर्ड्स। ये मैंने टेलीग्राम चैनल में दिया था। तो आप देखो यहाँ पर क्या है, अब क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है। फर्स्ट अबाउट बैक वाटर्स, right? First thing is about backwater, and you all know that backwaters, they're part of geographical feature of Kerala. Where do you find that? So, like here, what he has done, he has written that backwaters, right? Let me use the red color. Backwaters is clearly given. Backwaters, you know, are a network of interconnected canals, rivers, lakes, and inlets, and they are parallel to the coast. Right? Then he has mentioned Kerala is a vital geographical feature. And you know that if you can say, it is also, you know that the word which is instead दिया रहता है, are locally called as kayal, tiles. Right? This kind of chain of network. इसमें क्या होता है, what happened there? The Arabian Sea water, which is their part of it, and that becomes the part of the system there, right? So that's what you'll find here, right? You'll be seeing that thing here. You will be finding those kind of areas there, right? So jab aap backwaters, when you are reading about backwaters, right, always remember that you have to write about that thing in a detailed manner. Sorry, I had ordered food. So I am right now in the hotel room. ठीक है, तो अभी मैंने फूड ऑर्डर किया था. The person has brought the food, dinner. 10 से ऊपर हो चुका है, तो उसलिए मुझे गेट खोलना पड़ा. That was a part of it. तो मैं यही कह रहा हूँ, what I want to say here, ये जो part है, ठीक है, so you are bringing those kind of words here, ठीक है. Now you see here what he has written. Geographically, they enhance water connectivity, kind of network canal system there. And what is given? Natural drainage system. That means when the water, the rainwater or things which go to the seaside, right? And that help in preventing flood. Question is about importance. So that check the flooding. ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है केरला का. अगर ये नहीं होता तो केरला में बहुत ज्यादा फ्लड की सिचुएशन होती, ठीक है. देन यहाँ पे इन्वायरमेंटली, अब नाउ सी हियर, he has written environmentally, if you look at the host unique ecosystem with rich biodiversity. अब मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, a very good word would have been wetland. क्या उसका एक अच्छा वर्ड हो सकता है? wetland. Like here, including various fish species, birds, ये जो है,
तो यहाँ पर if you can mention, है ना, if you mention here wetlands, this type of backwaters serve as a wetland, is a water body, aquatic ecosystem, and you know wetland, right? और उसमें कई सारे ऐसे wetland जो रामसर साइट है. अगर इसमें कुछ एग्जाम्पल होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू गिव द एग्जाम्पल हियर अष्टामुडी, अब ये क्या हो गया ना, ये जो आंसर है इतना मतलब जनरल आंसर लग रहा है. जगन्नाथ दत्ता who has written the answer very general thing. If you can give example, Astamudi is a wetland which is Ramsar site, Kollam in Kerala. Then you know this one. Another one is very famous one, Vembanad Pool. Third is Sastam Kota. तो यहाँ पर कुछ आप एग्जाम्पल जब देते हो आंसर में, राइट, ऑल दीज आर रामसर साइट. यू नो व्हाट इज रामसर साइट? क्या होता है रामसर साइट? These are wetlands of international importance under Ramsar Convention. And they are again the part of the backwater system of Kerala. अब यहाँ सोशियो इकोनॉमिक जो दिया हुआ है, ये बैकवाटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिशिंग, एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, like houseboat. He has given about houseboat, resorts, right? Tourists which go there, that maximum number contributing to the economy of the state. But एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, that backwaters is also known for agriculture. Agriculture, tourism, he has written there. और यहाँ पे क्या है? That is another thing. The backwaters support local communities by providing livelihoods. अब क्या हो रही है? रिपीट हो रहा है ये चीज जो है, अगेन गेटिंग रिपीटेड. फिशिंग वहां पर फिर फिशिंग हो रहा है. अब ये जो रिपीट हो रहा है, दिस इज अ गेटिंग रिपीटेड. रिपीटेड पॉइंट है. अगर इसमें इसने कुछ एग्जाम्पल दिया होता, जैसे हाउस बोट दिया, अच्छा ठीक है. कई बार आप इन्वायरमेंट पढ़ते हो कि वहां पर राइस कल्टीवेशन जो होता है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल एलएपी, ही हैज नॉट गिवन दैट वन, दिस एलएपी अलापुड़ा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बैकवाटर ऑफ केरला, एलएपी, जहां टूरिज्म भी होता है. एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड क्लैम्प फिशिंग. वेरी यूनिक फिशिंग इज द क्लैम्प फिशिंग, बैकवाटर्स में होता है. आपको सोशल इकोनॉमी लिखना है ना, सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट लिखना है, क्लैम्प फिशिंग देयर. फिर उसके बाद क्या है? नॉट ओनली क्लैम्प फिशिंग बट ऑल्सो यू नो दैट दिस वन श्रिम्प फार्म, rice cultivation. Then again, you know, one more thing is that there's coconut. वहां पर कई कोकोनट कल्टीवेशन जो है, कोकोनट ग्रोइंग होता है, पाम, और कई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट में केरला का जो है, कि दैट राइस कल्टीवेशन, कोकोनट एंड ऑल दिस वन. कोकोनट का कॉयर इंडस्ट्री है, कॉयर, लेट मी राइट हियर, कॉयर इंडस्ट्री. जस्ट यू नो जूट, कोकोनट फाइबर, ये एलएपी में आसपास में वहां पर आता है. तो मार्क्स कम कहाँ मिलता है? मार्क्स कम वही मिलेगा ना कि जहां पर ये सारी चीजें हाईलाइट नहीं है, ये मिसिंग पॉइंट है वहां पर. फिर मैं एक और चीज बताता हूँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल इकोनॉमिक में. जब आप सोशल इकोनॉमिक की बात करते हैं, यू ऑल्सो टॉक अबाउट रिलीजन. व्हाट इज केरला कॉल्ड एज? प्रियंका, व्हाट इज केरला कॉल्ड एज पॉपुलरली? रश्मिता, दोज वर यूट्यूब चैनल ऑल्सो, केरला को क्या कहा जाता है? गॉड्स ओन कंट्री, गॉड्स ओन कंट्री, ये कहा जाता है ना. एंड विच इज द स्टेट फेस्टिवल ऑफ केरला? यू ऑल नो दैट. अभी होने वाला है, कमिंग मंथ्स में वो फेस्टिवल होने वाला है. व्हाट इज द नेम ऑफ द फेस्टिवल? प्रियंका? सर वो जो बोट रेस होता है सर, वही होता है क्या? नहीं नहीं, वो हाँ, मैं आऊंगा बोट रेस में. नरेंद्र, वो फेस्टिवल का नाम क्या है, जो स्टेट फेस्टिवल कौन सा केरला का, क्या बोलते हैं उसको?
Onam. Onam. Yes, sir. Yes. Onam is the state festival of Kerala. और जो बोट रेस है वेल्लम कली बोलते हैं. अब यहाँ एग्जाम्पल चाहिए ना, आपको एग्जाम्पल देना है आंसर में. यहाँ पर जो है ये जो बोट रेस है, कई बार जो बोट रेस रहता है ओनम जो होता है बोट रेस. अब ये जो बोट रेस है, दिस बोट रेस वेम्बनाड में होता है, इसको वेल्लम कली बोलते हैं. वेल्लम मीन्स वाटर एंड कली मीन्स स्पोर्ट. वेल्लम कली. तो जगन दत्ता ने लिखा है, लेकिन बहुत जेनरिक आंसर है. इट्स अ वेरी जेनरिक आंसर. इसमें मार्क्स ज्यादा नहीं मिलेगा बिकॉज इट लैक एग्जाम्पल्स. यस नरेंद्र, यस. हाँ नरेंद्र बताइए. Sir, in Broadway, we can also say that backwaters also help to grow some types of grasses and that provide habitat to the new species and biodiversity Correct. also. Yes, you are very right, Narendra. You are very, very right. This is again a very good point what Narendra has highlighted. And we can also say that backwaters help Kerala to recharge its groundwater and provide water to the Yes, domestic people. good, very good, Narendra. Very good. Because this backwater being an important wetland, it recharges the groundwater. And that's what it protects from water scarcity. Right? It's again, and people require drinking water. I'll give you a very good example. Astamudi. Astamudi wetland, it is in Kollam district of Kerala. That water, the water of this Kayal or backwater is used for drinking purpose. ये भी social economic हो गया ना? This also has become the part of social economic aspect. Right? The drinking water here, this part, this also has not been come here. Drinking water. Tourism is all right, but drinking water again recharge of groundwater, everything. So Jagannath Datta's answer, he has tried well, but in this case, I will not give marks, so much of marks. है ना? बहुत सारी चीजें यहाँ मिसिंग है. और 150 वर्ड्स में मैंने क्या बताया, आंसर राइटिंग क्या होना चाहिए? यू आर स्टार्टिंग विद अ स्मॉल पैराग्राफ, देन यू राइटिंग पॉइंट वाइज बुलेट पॉइंट्स टू गिव द आंसर देयर. और 3 पार्ट में है, ज्योग्राफी, सोशल, इकोनॉमिक. राइट? आई होप जो लोग अभी यूट्यूब में भी हैं, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. राइट? तो मेरा ये कहना है कि जब क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है, तो इसमें ट्राई करना है कि ऐसे क्वेश्चन जो है उसको प्रॉपर वे से आंसर करना है और उसको प्रॉपर वे से बताना है. यू टू मेंशन दैट वे इन सच अ वे दैट द आंसर शुड बी लुकिंग लाइक यू आर राइटिंग अ गुड आंसर देयर. राइट? शुड बी इन दैट वे देयर. राइट? So Jagannath Datta, I think he's not in the part of this session here. But what I'm doing here, I'm sharing this document, right? I will be sharing this document so that he is able to see this document in the Telegram channel, and all of you can see that document here. Sir, Yes, बोलिए. हाँ. sir, can we also say that backwaters is a good source of water? So if there is a good amount of water, it can also attract the factories or new industries in that particular area. Yes. That's true. That's again true there. What you are saying It will is provide very true. employment to the local people. हाँ. बिल्कुल, you are very right there. That could be the part of, and that is there are a lot of things are there which could be written point wise. मतलब you're writing 1, 2, 3, 4, 5 to the point. That could add more marks. उसमें और मार्क्स मिल सकता है यहाँ पर जो है ना? उसमें काफी अच्छी चीज थे. तो मैं ये सेव कर लेता हूँ उनका पार्ट ऑफ इट. नाउ यू राइट. नाउ लेट्स लुक एट अनामिका स्वर्णकर. Right? I'm sharing that one. Now look at her answer. This is Anamika's copy. ठीक है? अब आप देखो यहाँ पर इसने बहुत अच्छे से, है ना, इन्हें डायग्राम यूज किया. She has used a diagram. She has presented in a box Kerala with Kayal. See, she has used the word Kayal. And she depicted here Kasargod.
northern Kerala. Then again you see Velia Parambajwe, then Kajikot, then LAP, Vembanad. Now this is called presentation. This is called answer presentation. Right? This is what she has brought this. Now look at here. Now look at her answer definition part. Now what is backwater? What it says here is a part of main rivers. Like Periyar. Periyar is one of the very important river of Kerala. Right? Isolated by opposite current flow. Now from where the current flow comes? From the ocean. She has given technical definition. है ना, समुद्र का जो पानी आता है अंदर की ओर, right? Some obstruction is there. Now what is here? There is no current or have little current, kind of a stagnant water. Now what happened? This type of backwaters form like a lagoon, right? That here result as a lagoon, result into lagoon formation, small kind of lagoons, right? Such areas have their local names. For example, she has written Kerala, we call it Kayal. In Odisha, we say lagoon. She has mentioned that. Now look at here. Geographical importance. A shallow lagoon sea is not deep water. Shallow. The sea inlet that is separated from a larger body of water. Now she has drawn the diagram. This one, Kasargod and all this. She has given with example and the, see, when you're writing geographical, you can support by map. Geographical thing, you can always support with some kind of rough map. And she has done the rough map. She has done a rough map and written about not only the names. See here, she has written not only the names, but also drawn the map. This will give her more marks. है ना, इनको नंबर ज्यादा मिलेगा. अब देखो यहाँ क्या है, those water bodies separated by natural barriers like a coral reef. Another thing, she has mentioned coral reef, barrier reef, sometimes fringing reef. Now another thing, Kayal, and from a small lake like Vembanad. She has given the example Vembanad, Kayal. Now, what is Vembanad? It's a Ramsar site. It's a Ramsar site of Kerala. उस context में आता है. Now going on there, environmental importance. See here, what she has written about environmental importance. What is she has given? See here, very important thing. बहुत अच्छे से लिखी, mangroves. This backwater system of Kerala is dotted with mangroves. And mangrove ecosystem become very important, just like Sundarban Delta, Vidarkanika, Chilika. These mangroves, this is rich in biodiversity. They're rich in biodiversity part. Many species of migratory birds come in winter. बहुत सारे birds जो है winter में यहाँ पर आते हैं. बहुत सारे fish species, amphibian, reptiles यहाँ पाया जाता है ना. अब इसी में एक example आता है कड़लुंडी. ये कड़लुंडी is in part of this is a bird sanctuary. Is a bird sanctuary which is located in Calicut or Kozhikode. Kozhikode में located, Calicut में यहाँ पर है. Which is known for mangrove forest. मैं वहाँ जा चुका हूँ. मेरा आप देखो YouTube में वहाँ शॉर्ट्स एंड रील्स भी होंगे. बैकवाटर में जो मैं गया हुआ हूँ उसके वीडियोस भी हैं. You'll find that one and see what is she has given. This is basically a house of many wildlife species. अब देखो आप यहाँ पर wildlife, but now the spelling is wrong. What should be correct spelling? SPECIES. हो सकता flow में miss कर गया. Not her fault. In flow she would have missed there. Healthy balance now what is happening there? See, ये चीज है, but she is giving the kingfisher, crow pheasant, woodpeckers, dogs, then ducks, bee eaters,
kites, right? Aquatic ecosystem, right? Catfish, mullet, oyster, crab, ये सब एग्जाम्पल दिया है, ठीक है? ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ये, लेकिन यहाँ पे क्या मिस हो गया वर्ड? Which word is missing here? Wetland. ये वर्ड को यूज करना है. This wetland word has to be mentioned. है ना, wetland. It's good that she is giving the answer in terms of Sarakuj, but mention the word wetland. Now that is involved in terms which you have to write. Ecological term wetlands. Wetland word होना चाहिए वहां पर. ठीक है. अब यहाँ मैंग्रोव जो है, kidneys of the earth, she has written there. Help filter, purify water, absorb heavy metal. उसके बाद prevent coastal soil erosion, natural calamities, tsunami, hurricane, Webinar KL and all. She has given that. Right? Even certain type of coral reefs are also found. Some kind of small type of reefs are there. Now, socio-economic importance. Here, tourism. What is called ecotourism? Right? Then again, she has given fishing, breeding, shrimp farm. This is a part of it. Now, what is problem here? There's a like here, for example, purchase the backwater, amazing view, God's own country. See, she has written the word God's own country. LAP, Kuttanad. Now, it's a very important word she has given. Rice ball of Kerala. It's called GIHS, globally important agriculture heritage system. Right? Ab dekho proper maintenance. What she has given here? Misty government program for mangrove conservation. Now here, this is called GIHS, globally important agricultural heritage system. Kuttanad below sea level farming. Kuttanad below sea level farming. Right? Is a out of three. One is Koraput in Odisha. Koraput mixed farming in Odisha. Saffron cultivation Kashmir Valley. And third is Kuttanad below sea level farming. It is recognized by FAO, UN body FAO, Food and Agriculture Organization. She has given that answer here. So her answer is more better, good. Even she is trying to bring, see, mystery for mangrove conservation she has written here. तो ऐसे आंसर और इंप्रूव होता है, ज्यादा बेटर होता है. और she has written there 150, थोड़ा सा इसका वर्ड लिमिट ज्यादा चला गया है. राइट, हियर इसने क्या कुछ चीजों को बहुत ज्यादा इलॉबरेट किया है. तो हियर मेंटेन वर्ड लिमिट. तो ये क्या है, थोड़ा सा वर्ड लिमिट आपका ज्यादा जाता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है. इफ यू राइट सम 20-30 words extra, there is no problem in that, but you will lose the time in the main exam. If you are writing too much, एक तो स्पेस दिया होता है. अब फिर क्या होगा, आपने ज्यादा लिखना चाहिए तो जहां जहां पेज एंड हो जाएगा, when the page ends, तो आपका आंसर will remain incomplete, क्योंकि नेक्स्ट पेज देयर विल बी न्यू क्वेश्चन. तो दो चैलेंजेस होंगे. पहला है कि आपने अगर ज्यादा लिखने ट्राई किया, आपका आंसर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, पेज खत्म हो जाएगा. गिवन स्पेस गिवन इन द आंसर बुकलेट, तो आपका आंसर इनकम्प्लीट हो गया, यू लूज अ मार्क. और दूसरा है, अगर मान लीजिए आपने छोटे छोटे करके प्रॉपर एडजस्ट करके आपने ज्यादा लिख भी दिया, यू विल लूज योर टाइम, यू हैव टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चंस. तो वर्ड लिमिट को मेंटेन करना जरूरी है. इट मेंटेन द वर्ड लिमिट्स. राइट, so that's what she has really done well. ठीक है, I hope you are able to understand. ऐसे जो क्वेश्चंस है मैं सैंपल के साथ समझाते जा रहा हूँ. And now what I'll do here, I'll again share it. I'm sharing in the Telegram group. You all can have a look into this. है ना, आप इसको देख सकते हो. आज का सेशन का यही मतलब है कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, एंड यू आर ट्राइंग टू राइट, यू आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम अदर्स. है ना, आप उसको लर्न कर रहे हो कि दूसरे से कैसे वहां पर चीजें वहां पर हैं. ठीक है, तो दैट इज वेयर थिंग कम्स इनटू दैट.
Now I'm going to another one here. This person is Smriti, right? Smriti has Smriti. She has written SMRUTI. So let me see here. She is shared by the Acrobat reader there, है ना? उसके थ्रू उन्होंने शेयर किया हम. तो कई बार क्या होता है, स्कैन कॉपी होने पे क्या होता है कि आई विल बी एबल टू राइट एंड मार्क द पॉइंट्स हियर, राइट? वहां पर ये चीज आ जाता है. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ थिंग हियर, राइट? Let me go back to Telegram. I'm again opening this one. So इसमें I'll just let you know that what exactly she has written there. You will be able to see that. ये part जो. Now if you look at here, this. Suppose I'll just share this page. मैं एक और आंसर लूंगा. I'll not take much time because already 10:30 हो चुका है. Now you look at here. Anamika is there in YouTube channel. She has done well. Well done, Anamika. You have done well. Now if you look at here, this one. Smriti has written there. Now she has explained here. Backwater is a part of the main rivers there. Commonly, now see here, this cutting. Avoid, see, one or two words, if you cut, then it's all right, but avoid too much of cutting there, right? Now look at located in dense vegetation area. But again, now see here. A problem kya hai? She is writing about Amazon River, tributaries, Rio, Niger, India, Periyar rivers. She is giving the global example also, where this kind of backwater system exists, right? Where such kind of backwater system exists, she is providing that kind of thing there, right? But the problem here, this PDF, she has, so let me do one thing here. ये जो है, that's always, let's say, एक होता है जब आप स्कैन करके देते हो ना, when you are giving scanning there, like others have given, तो direct copy होती है. Now problem with here, this answer is that I have to again, let me see here. अब मुझे टिट्स एंड बिट्स में उसको शेयर कर इवैल्यूएट करना होगा. But now let's look at here. I'm just sending this one. I'll go to the other part of it. ठीक है? But I'll not take much time. I'll now quickly go through. You got an idea. आपको एक idea मिल चुका है. You are getting the idea about the answer of these people, what they are writing there, right? You are getting the idea here. Now let's let me go to the next one. She has given about this one, geographical, right? Geographical part. Let me again share it. Now let's look at here. Let me look at here. Geographical. Now what is here? In geographical, backwater in Kerala connect with Arabian Sea, right? Malabar coast. Now see, she has used the word Malabar coast. You know, Konkan and Malabar, west side of India, right? Southwestern. Now, what is written? Interconnected, so many lakes, part of it. But she has missed this word lagoon. Again, too much of cutting, right? तो ये थोड़ा proper नहीं है. मतलब this means it requires more kind of refining, fine tuning there, right? So this again not that much of मतलब impactful नहीं है. If you see Anamika's answer and if you compare here, तो यहाँ पर वो बात नहीं आ रही है, right? That is not coming here. So let me just one by one I am putting across here. तो मेरा ये कहना है कि when you are trying to write answer, you read it first. आपको जितना पढ़ना है, you read it. You read a number of documents, whatever you come across. But once you read it, once you know about it, then write in a proper way. And again, look at the time management. Time management is very, very important. If you're writing 150 question, 150 words,
you're writing 150 words question, try to write within 8 minutes. 8 मिनट के अंदर 150 वर्ड के जो क्वेश्चन होते हैं उसको लिखने का प्रयास कीजिए आप. Try to complete that one, right? So that is more better if you are trying to do that in that. ठीक है. अब इसने क्या है, पूरा लिखा नहीं है बस. There is no socio-economic aspect. I don't see socio-economic aspect. So her answer is incomplete. Her answer is incomplete there. ठीक है. तो वहां पर ये चैलेंज आ जाता है. This is where the problem comes here, right? That answer is not completely part of it, right? So what I would like to do, उसमें marks फिर कम मिलेंगे. Are you getting my point? In that case, the marks will be less, right? तो वहां ट्राई करना है कि आपके मार्क्स के कॉन्टेक्स्ट में you are able to, you know, write good one. So now let me take one more answer here. Gopal is here, है ना? गोपाल ने एक आंसर लिखा है, तो गोपाल का मैं आंसर लेता हूँ. गोपाल इज वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. गोपाल ने सोला फॉरेस्ट पे लिखा है आंसर. ठीक है, लेट मी शो यू गोपाल्स आंसर. मैंने जो दूसरा जो क्वेश्चन दिया था, सेकंड क्वेश्चन व्हाट आई गेव, राइट, he has written that. What is second question I have given? What is Sola? How Sola help in survival of species? Mention few threats to the Sola in recent years. केवल गोपाल का और एक और किसी पर्सन का आंसर आया हुआ है. Only 2 persons have given the answer. Rest of the people have not given chat group there. You can write and give there. But now look at here. Sola forest. Now see here. What he has done, Sola forest are tropical forest. ठीक है. Tropical, this one mountain forest. Mountainous. Right. Comprises subtropical and also mountain temperate forest. But again now see Gopal cutting. ये कटिंग जो हो रहा है इसको अवॉइड करना है. Avoid cutting there. Now the word Sola, now she has given Solai. It's very important. The word Sola, he has given the origin word, Tamil word. And this Chalai word which means cold place. As the name here suggests, cold the forest here. कहाँ पर है? They are sheltered in valleys with more moisture. That means rainwater, right? And proper drainage. Now height also. Height should be more than 1500 meters. Now ensures a question क्या? How? I have given the question how. How it helps in survival of the bird. तो यहाँ क्या? Due to its unique features. Unique features is survival of many endemic species. He has given the name here. That but here examples. अब जो examples है like overhead water tanks or receive sufficient moisture, proper drainage. Now again इसको इसके साथ लिखा जा सकता था. ये वर्ड को ज्यादा कंज्यूम कर रहा है गोपाल. आपने पहले ऊपर लिखा ही है कि वहां पर प्रॉपर ड्रेनेज है, सफिशिएंट मॉइस्चर है. आपको केवल यहाँ पर उसे ऐड करके थोड़ा पॉइंट गिविंग बर्थ ऑफ पेरिनियल रिवर डाल देते हैं. ओनली ये एक नया पॉइंट है वहां which you could have written there. This is a new point which you can write there. Now your thickets of shrubs and ferns, high frost, fog and frost condition, fog, don't allow the tree seedlings to go beyond this one. लेकिन अभी भी वो बात नहीं आ रही ना, how it support the species. यहाँ पर isolation from other ecosystem. This is what coming here. Other ecosystem from so many years Solas have formed what are called sky island. Now this is the one. Being an isolated kind of ecosystem, separated in the mountains, we support such many type of species of birds and other animals. ये एक point आता है. Then again, despite its unique features, human beings are unique animals. Having यहाँ पर क्या है? एक बहुत अच्छा पॉइंट गोपाल ने रखा है, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, एक्सोटिक स्पीसीज इंट्रोड्यूस इन दिस काइंड ऑफ इकोसिस्टम, लाइक हियर अकाशिया, यूकलिप्टस,
Then again, too much of agriculture, pressure because of agriculture, clearing forest for cultivation of tea, बहुत important है. Like for the Munnar, I was in Munnar. Munnar is known for tea gardens, चाय के बगान है. जैसे असम में, दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल के वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग known for tea, Darjeeling tea. Assam also is known for tea. So Nilgiri is also known for tea, and Munnar is one of the sites. So converting those land into tea gardens, cattle grazing, fuel wood, then tourism, on railway tourism. Too many hotels, too many restaurants. मैंने मुन्नार में देखा था. I personally experienced that. It's very uncontrolled tourism there. है ना? तो वहां पे क्या हुआ है, बहुत सारे होटल आ गए, रिसोर्ट्स आ गए, बिल्डिंग्स बन चुके हैं, कॉन्क्रीट जंगल. He has used a very good word, concrete jungle. Traffic congestion, garbage. And this I have seen right now, last month in the June, when I was in Munnar, I have witnessed this kind of thing. In water degradation, जो गोपाल ने यहाँ आंसर पे लिखा है. Then again, other threat include forest fire, ये भी है गर्मी के समय में. Global warming and hydroelectric project, again dams and the project. The Sola being an extraordinary and unique forest need protection. He has ended the question with the conclusion. He has given the conclusion. So he has tried. That's a good attempt. Right? He has tried to write the answer. गोपाल कुछ पूछना है? ये आपका आंसर है ना? Yes, sir. This is my answer. Yes, good. Gopal, you have tried very good. Thank you, sir. You only lacked one area. This example of species. Like you could have mentioned here Nilgiri tahar. Nilgiri tahar is a very important species. There's a mountain god which is found in the Sola forest. It is nowhere found. It's endemic. Then I'll give you one more. Nilgiri is a kind of a grassland with the forest. So here you'll have herbivores. आप यहाँ नीलगिरी टहार का एग्जांपल दे सकते थे. You could have given this example नीलगिरी टहार, which is state animal of Tamil Nadu, right? So this could have given you that one extra aspect of that. वो missing है यहाँ पर. Name of species there, right? अभी recently there was another sighting. An IAS officer sighted Nilgiri marten. It just looks like a squirrel or mongoose. Marten, very rare. Then lion-tailed macaque. Lion-tailed macaque, a very unique primate. Nilgiri langur. A lot of species are there. या कुछ आप एग्जांपल दे सकते हैं. अभी हाल ही में तमिलनाडु के सॉफ्ट वुड, लॉन्ग वुड बोलते, लॉन्ग वुड सोला फॉरेस्ट को रामसर साइट बनाया गया. Right? India has now got many Ramsar sites now. So Longwood Sola forest has been declared as a Ramsar site, wetland. So those current example you could give here, right? Yes, sir. So try more better. You have written. I am very happy. है ना, आपने ये लिखा है, बहुत खुशी की बात है. और ऐसे ट्राई करते जाना है, right? And I request all of you, not only Gopal and the people who have Anamika जिसने आंसर लिखा है, everyone should try it out. If I am giving any question in the Telegram channel, and at the same time there is a WhatsApp group for mentorship program. जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया था mentorship program, उसके लिए WhatsApp group है. There is already a WhatsApp group. So there, Amrit Sir from Devar IAS Academy, Diya, Amrit Sir is giving history question, and I have asked Sir that how many questions, how many students are giving those questions. तो बहुत कुछ कम ही लोग दे रहे हैं. अब मुझे पता नहीं वो व्हाट्सएप ग्रुप में इतने लोग होने के बाद there are very few response I get. Very few response. Gopal, I have shared your answer in the Telegram channel. You can have a look into that. Yes, sir. Right? I have already shared that. You stay where? Where you stay there? Sir, I stay in Odisha, sir, from Bhadrak, like 140 kilometers from Bhubaneswar.
Okay, good. Saurabh Khan has also written this Sola Forest. I can see there. And even there are other Anamika has also written. What I can see here. Just 1 second. I'm sorry. They've asked for a dinner. वो डिनर है ना. मैं हर बार सोचता हूँ कि 1 घंटे के अंदर मेरा सेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन 1 घंटे में कभी सेशन खत्म होता ही नहीं है. वो प्लेट वगैरह चाहिए था. अभी तो खाना ठंडा भी हो गया. नॉट ईटन द फूड ऑल्सो. वेरी सुन. सी आई हैव गॉट ऑल योर आंसर देयर. गोपाल का है, और अभी जो जिन लोगों ने किया है तो उसका मैंने शेयर किया है. सौरभ खान इज ऑल्सो रिटन. लेट मी आई थिंक कितने लोगों का मिस हो गया है? एनीबडी आई हैव मिस्ड आउट देयर? आई एम जस्ट सीइंग माय चैनल हियर. अच्छा, सौरभ का भी है. सौरभ ने, देवलीना इज ऑल्सो देयर. Anamika, I have already evaluated your Rohit Rathore has given, right? Mezil has given here. So what I'll do here, Rohit Rathore, Mezil, then Smriti, I have already checked your answer, but please give you in a better way so that I'm only getting 1 page. Please upload again. Then Devlina Nandi has submitted. Saurabh Khan का 2 आंसर आया हुआ है. ठीक है. So I will correct and give it to you. ठीक है. I'll give it to that. All right. I will correct those answer you'll get in Telegram channel. ऐसे मैं evaluate करके with my comment I'll give it there. ठीक है. So yes, Narendra Singh, mentorship program we will start there. We will just waiting for certain numbers there, right? Rohit, I will be giving you the feedback there. Saurabh also, your answer will be evaluated and given there, right? Clear here? So anything you want to ask? I'm looking at YouTube channel chat also there. अब मैं completely session लेने वाला. I will start this series also there. Just I planned there to have a series of geography, right? वहाँ पर topic wise होगा, right? I'm also going to start current affairs. ये जो daily news feed है DNF, the DNF what you have daily news feed, that daily news feed will be also covered as a part of current affairs. ठीक है. तो बाकी लोगों के जो आंसर्स है वो मैं इवैल्यूएट करके टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा. मैं आई विल गिव इट ऑन टेलीग्राम चैनल. एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनी स्पेसिफिक थिंग? आई एम लुकिंग एट यूट्यूब चैनल आल्सो देयर. इफ नॉट दैट, देन व्हाट आई कैन डू इज दैट I will evaluate rest of the thing and provide it there in the channel there. All right, Telegram channel. So you got an approach, right? How to go about with mains answer writing part. In between, we'll have such more discussion so that you are getting more input, more support from my side. तो समय समय पे मैं इस तरह से कुछ ना कुछ आपको फीडबैक देता रहूंगा, जिससे आप उसको आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर पाएंगे. You'll be able to improve your answer writing part. तो बहुत सारी चीजें हैं on the cards. Remain connected, right? After long time, I'm coming live. ठीक है. And my hairs are gone. मेरे बाल जा चुके हैं. Right? तो तिरुपति बालाजी में मैंने शेव ऑफ कर दिया my head. But don't worry, मैं बाल फिर से Hello? ग्रो कर दूंगा. I will grow my hair. And I'm right now in Hello? taking classes there. Anything you want to ask? Somebody was asking the question. Hello? Yeah, Rashmita, yes. Sorry sir for interference. सर आंसर राइटिंग करने के लिए थोड़ा कॉलेज नहीं आ रहे. मतलब कैसे स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ? नहीं, Yes, आंसर राइटिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs. आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, whichever subject you are reading, let's say Indian polity or economics or geography, history, whatever,
Best thing is that take previous year question PYQ and try to write the answer there. Now कहाँ से start करना है? तो पहला है PYQ को try करना है, right? पहले आप PYQ try कीजिए. जी सर. PYQ is very very important. Then you can take the coaching institute से question जो होता है. जैसे for example बहुत सारे coaching institute are daily current affairs, and then it gives the question for writing and submitting. तो फिर वो क्वेश्चन लेके पढ़ के आप राइट करके उसको सबमिट कर सकते हो आप. तो वो लोग भी इवेलुएट करेंगे. दे विल आल्सो इवेलुएट एंड गिव यू द फीडबैक. नाउ हाउ टू स्टार्ट राइटिंग आंसर हमेशा याद रखना है. whenever you are writing having any question जो मैंने बताया, understand the demand of the question, try to see the key terms there, explain, discuss, and then comment, criticize, critically acclaim, critically comment, illustrate, elucidate, examine. That, and according to the topic which is asked, you are writing the answer there. उस टॉपिक के बारे में. लेकिन पहले टॉपिक का पढ़ा हुआ होना बहुत जरूरी है. मैं हमेशा कहता हूँ मेंस आंसर राइटिंग कैन बी यूजफुल ओनली व्हेन यू हैव रेड दैट सब्जेक्ट thoroughly, that topic thoroughly. Current affairs, it always connect with current affairs, government programs, policies, some kind of thing what you have read in newspaper, magazine, examples, give examples, applications. ये सारे चीजों को जोड़ना होता है. वो सिंपली एक दिन में नहीं होगा. इट विल नॉट कम इन वन डे. मेंटरशिप प्रोग्राम इसीलिए होता है. why institute runs mentorship program, that you have a daily answer writing practice and mentors are able to guide you. So don't worry, we are into that. So take one previous year question, try to answer the question, try to see how you are able to write. Look at the model answer, whether you have written all the points or not, right? उसमें क्या improvement चाहिए, क्या point miss out हो गया, उसको उसी ढंग से करना होगा. ठीक है? Then जी we'll सर. be able to. जैसे ऑप्शनल का कमेंट आ गया है, मतलब ऑप्शनल में कितना लिखना है, वो सब का कमेंट आ गया है. वैसे जीएस में कुछ नहीं आ रहा है. वर्ड लिमिट ज्यादा हो रहा है और टाइम भी ज्यादा कंज्यूम हो रहा है. तो जीएस में क्या है ना, बहुत सारे मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं. ऑप्शनल में आप एक फिक्स चीज पढ़ते हो आप, बट फॉर जीएस के लिए आपको उसका सारा चीज पता होना चाहिए. जो भी टॉपिक आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उसके सारे एस्पेक्ट को जानना बहुत जरूरी होता है. करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. विच आई सेड कि आपका करंट अफेयर्स कितना स्ट्रांग है, हाउ यू आर डूइंग योर करंट अफेयर्स वेरी वेल, क्योंकि उसको इंटीग्रेट करना होता है. उसका एक ही तरीका है. ऑप्शनल में क्या है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है. इट इज मोर अकेडमिक एंड सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेपर 1 पेपर 2 ऑफ ऑप्शनल. जीएस क्या है, जनरल एस्पेक्ट में होता है. उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है. तो वो तभी होगा व्हेन यू आर राइटिंग देन ओनली. उसके लिए मैंने बताया यू हैव टू टेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू. उसके टॉपिक जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पे है या गवर्नेंस पे है या कोई कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया, कोई भी ऐसा टॉपिक है विच यू हैव रेड थॉरोली. और फिर उसका आंसर फ्रेम करना होता है, उसका स्ट्रक्चर डेवलप करना होता है कि क्या क्या पॉइंट है. इंट्रोडक्शन, व्हाट आई एम गोइंग टू राइट. बॉडी ऑफ द आंसर, व्हाट पॉइंट्स आई एम गोइंग टू राइट. कंक्लूजन, हाउ आई एम गोइंग टू राइट देयर. एंड देन यू हैव टू अकॉर्डिंगली राइट दैट आंसर. तो उसके लिए आप बेस्ट तरीका वहां से स्टार्ट करना है. इज ऑलवेज द बेस्ट वे टू गो अहेड विद दैट, राइट? ओके सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, वीरेंद्र इज द, आई एम कंफ्यूजिंग वीरेंद्र विद नरेंद्र. अच्छा, वीरेंद्र इज इन जूम सेशन, नरेंद्र इज इन यूट्यूब चैनल. मैं बार बार आपका नाम नरेंद्र बोल रहा था. ओके, दिस इज वीरेंद्र सिंह देयर. ऑलराइट. अच्छा, नरेंद्र इज आल्सो देयर. आई एम सॉरी, नरेंद्र इज आल्सो इन जूम सेशन. ऑलराइट. अच्छा, बोथ नरेंद्र एंड वीरेंद्र बोथ आर देयर. राइट. Okay, good. Priyanka has disappeared. All right. Priyanka has come to YouTube channel. Anything else, or shall we end the session? मैं प्रीलिम्स के बाद थोड़ा सा है ना, मैं देख रहा था कि चीजें, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते ज्यादा. So I was waiting that the student may get settled down. फिर प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया. रिजल्ट के बाद भी हलचल मची हुई है ना. बट अगेन डोंट वरी, try your level best next year 2025, right?
वो बहुत इंपॉर्टेंट है. So let me I'm very good to see you all. ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब लोग आज मिले हैं. बाकी लोगों के आंसर दे दिए जाएंगे. Rest of the people they will get their answer. ठीक है, I will evaluate and give it to the people there. और जो मैंने अब लिखा है, whatever I have written in the part of notepad, उसका मैं PDF I'll share it. Right. So we'll meet soon. Thank you everyone. And tomorrow again I will be meeting there. तो कुछ जो आप लोगों ने आंसर सबमिट किया है, I will give you my feedback. Right, Saurabh and Rahul and other people, you'll get the feedback also there. All right. So let us meet there. Now I am again starting the program. So we will be meeting live regularly. Right. Those who want to come to Zoom through Telegram channel, you can get the Zoom session there. All right. So I hope this is useful to everyone. Right. Let me end the session and we'll meet tomorrow there. I hope you all will be joining there. All right. So thank you everyone. Take care and keep studying. Keep your health also, right? Be healthy and keep all your tension away. ठीक है, मुस्कुराते रहिए और टेंशन से दूर रहिए, पढ़ाई करते रहिए. All right. कल में हम लोग जरूर मिलेंगे. Tomorrow again I'll meet at the same time 9 p.m. All right. Take care. Thank you. Bye bye. Good night. Good night everyone. Thank you.